Hello, good evening, everyone. Welcome to the YouTube channel of Ranker Buzz. We are again here with the landmark judgments of the year 2021-22, and this is the fifth session we have in this series. So today we will discuss another important landmark judgments of 2021. So let's start with the today's cases. So the very first case here is the Brajesh Singh versus Sunil Arora. So this is a very important and a landmark case when it comes to 2021, and this is with respect to this is related to a petition being filed with respect to the criminalization of politics. And why this judgment is important is because in a previous judgment named a recent judgment, like it was Ram Babu Singh versus Sunil Arora 2020. So in this particular case in 2020, certain directions were given to the political parties as well as to the election commission by the honorable Supreme Court. Supreme Court ने यहाँ पे कुछ guidelines दी थी that need to be followed to to publicize the things which are related to criminalization of politics. Like if somebody is contesting a election, if somebody is contesting a election, and if that person has some criminal background, okay, if that person is having certain kind of criminal background behind him, so that need to be published in such a way that public, those who are going to vote them, must know that what kind of criminal background does that person is having. So in that regard, a different number of directions were given by the honorable Supreme Court in the Ram Babu Singh versus Sunil Arora 2020 case, but those directions were not followed by the political parties. That is why another petition in the form of like a contempt case, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट यहाँ पे फाइल कर दिया गया इस पर्टिकुलर केस में, दैट इज ब्रजेश सिंह वर्सेस सुनील अरोड़ा, दैट पॉलिटिकल पार्टीज आर नॉट फॉलोइंग द डायरेक्शन बीन इशूड बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, जो कि राम बाबू में यहाँ पे राम बाबू केस के अंदर यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कुछ डायरेक्शंस दी थी जिसको फॉलो करना इंपॉर्टेंट था, बट दैट वाज नॉट फॉलोड इन द लेटर टाइम, जो बाद में इलेक्शंस हुए वहां पे फॉलो नहीं किया गया। तो इसी को लेके यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा से इस केस को सुना और इसके अंदर कुछ और नई चीजें बताई, that we will see here. So basically this is related to this is a contempt case, and due to the contempt political parties पे फाइन वगैरह भी लगाया गया सुप्रीम कोर्ट द्वारा और डायरेक्शंस फर्दर दी गई इलेक्शन कमीशन को भी. So we'll see that what exactly happened in this case and what Supreme Court said about this particular case. So in this case, a division bench which was hearing this particular petition, division bench of the Supreme Court found several political parties guilty of contempt of court, because there were directions being given, but that was not followed by the parties, political parties. So when certain direction is not being followed by the the direction given by the Supreme Court not followed by the the people, then definitely a contempt of court is one of the solutions over there. So for the non-compliance of directions given by Supreme Court in Ram Babu Singh Thakur versus Sunil Arora 2020, जो कि मैंने आपको ऊपर बताया that this was the case in which those directions were given, but that was not followed. That is why this particular, the recent case Brajesh Singh versus Sunil Arora was filed in 2021 in connection with disclosure of information of candidates with criminal antecedents. Means जिसका भी कोई criminal record है उससे related, उसके disclosure से related, because it was felt that it is a ये right to information के अंदर cover होता है. It is the right of every citizen that whoever is contesting the election and to whom the people are going to vote must know about their criminal records. So in that regard only this judgment was very much important. So penalties have been imposed on the political parties found guilty. अब यहाँ पे जो political party जो है guilty पाई गई, और almost सभी पार्टियां जितनी भी it was filed after some elections in the Bihar.
So all the parties which were contesting over here, so almost all the parties have been fined, and penalties were imposed on them because nobody was actually following the guidelines being issued by the Honorable Supreme Court. So court also issued further direction in order to make the right of information of a voter more effective and meaningful. यहाँ पे फर्दर और भी पेनल्टी तो लगाई गई, साथ में यहाँ पे और भी कुछ डायरेक्शंस दिए गए कि भाई आपको फॉलो करने होंगे आगे से, ठीक है. And at the same time also directed the Election Commission of India. Election Commission of India is directed to create a dedicated mobile application containing information published by candidates regarding their criminal antecedent. तो जो भी जो कैंडिडेट है जब वो हलफनामा फाइल कर रहे हैं तो वो जो भी बातें बता रहे हैं उसको पब्लिक किया जाए, दैट व्हाट आर द सर्टेन एक एप्लीकेशन बनाए आप मोबाइल का जिसके अंदर की सारा डेटा हो, कोई भी अगर चाहे तो उसे देख सके, दैट व्हाट इज द criminal record of that particular contestant who is contesting the election, so that at one stroke each voter gets the information of his or her मोबाइल फोन. उसके फोन पे सारी चीजें आ जाए हर किसी के, तो हर कोई देख ले भाई कौन किसका क्रिमिनल रिकॉर्ड क्या है. द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज आल्सो डायरेक्टेड टू कैरी आउट an extensive awareness campaign to make every voter aware about his rights to know and the availability of information regarding criminal antecedents of all contesting candidates. तो कहा भाई यहाँ पे जो है एक तो मोबाइल ऐप आप बनाइए, साथ ही साथ आप अवेयरनेस कैंपेन्स चलाइए हर वोटर के लिए कि वो जो है जितने भी क्रिमिनल रिकॉर्ड है हर किसी को उसको पहचान पाए, उसको देख पाए और उसको सारी की सारी सर्च करना इजी हो लोगों के लिए. इसके लिए आप अवेयरनेस मतलब कैंपेन चलाएं. देन as we have seen and we have discussed कि भाई राम बाबू सिंह ठाकुर वर्सेस सुनील अरोड़ा 2020 के अंदर जो डायरेक्शन दी गई थी वो फॉलो नहीं की गई. तो वी विल ऑल्सो लुक एट द डायरेक्शंस बीन गिवन जो कि फॉलो यहाँ पे नहीं की गई, वो और हमें क्लियर हो जाएगा कि कौन सी ऐसी डायरेक्शंस थी जिसको फॉलो यहाँ पे नहीं किया गया. तो first direction was any candidate contesting an election must fill in a form issued by electoral commission incorporating all the relevant details. पहले तो कोई जो फॉर्म आपको दिया जाता है उस टाइम पे जब आप फाइल करने जाते हैं नॉमिनेशन, तो वहां पे उस फॉर्म को आप फिल करेंगे पूरी तरीके से, सही तरीके से. एंड इन बोल्ड प्रिंट द क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स पेंडिंग अगेंस्ट द नॉमिनी मस्ट बी एक्सप्लिसिटली स्पेसिफाइड इन द फॉर्म. फॉर्म के अंदर जो नॉर्मल फॉन्ट है उसमें नहीं, बोल्ड फॉन्ट में ये चीज लिखी होनी चाहिए कि भाई कौन कौन से क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स उसके अगेंस्ट चल रहे हैं. एंड next is if the nominee is challenging the ticket of a specific party, he or she must tell the party to which he relates to ongoing criminal case. और जिस भी पार्टी से वो नॉमिनेशन फाइल कर रहा है, फॉर एग्जांपल somebody is contesting election from the party BJP, some from Indian National Congress, some from RJD, some from JDU और XYZ, किसी भी पार्टी से अगर कंटेस्ट करने वाला है, नॉमिनेशन फाइल कर रहा है, तो वो अपनी पार्टी को भी अपने सभी क्रिमिनल रिकॉर्ड्स के बारे में सारी जानकारी समय पर दे नॉमिनेशन फाइल करने से पहले. That the next direction was the political party must place all such data and details on its main site regarding the pending criminal proceedings of its members. और फिर पॉलिटिकल पार्टीज को ये डायरेक्शन दी गई कि भाई आपको पहले उसने बता दिया, तो जब उसने बता दिया है आपको तो यू मस्ट पुट ऑल द क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट हिम, जो भी चीजें उसके अगेंस्ट चल रही हैं, दैट मस्ट बी एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड ऑन योर वेबसाइट. आपकी वेबसाइट पे भी वो सारी चीजें अवेलेबल होना जरूरी है. देन व्हाट नेक्स्ट, द court gives direction that the candidate and the specific political party to which the candidate belongs shall issue a statement concerning the candidate's history in most widely published local newspaper. अब यहाँ पे most widely न्यूज़पेपर की बात की, जो सबसे ज्यादा उस प्रदेश के अंदर सबसे ज्यादा जो न्यूज़पेपर बिकता है या फिर लोग पढ़ते हैं, उन न्यूज़पेपर्स में आपको उस बात को पब्लिश करना है कि भाई ये इस पर जो भी कंटेस्ट कर रहा है इसके ऊपर ये केसेस चल रहे हैं ऑलरेडी, कि भाई पब्लिक डोमेन में हो कि भाई वो किस कैरेक्टर का आदमी है, कितने केसेस उस पर चल रहे हैं. दे शैल ऑल्सो बी एडवर्टाइज इन डिजिटल मीडिया पे भी एडवर्टाइज करना है. दैट इज दे शैल बी एडवर्टाइज एटलीस्ट 3 टाइम्स आफ्टर फाइलिंग द नॉमिनेशन डॉक्यूमेंट. एटलीस्ट 3 टाइम जो है उसको वहां पे आपको नॉमिनेशन फाइल करने के बाद एडवर्टाइज करना है आपको. तो ये जो न्यूज़पेपर वाली बात थी ये भी ज्यादातर ने फॉलो ही नहीं की, और किसी ने एक दो ने फॉलो भी की, तो इस तरीके से की कि जो सबसे लीस्ट रेड जो न्यूज़पेपर होता है, सबसे लीस्ट रेड जो होता है उसके अंदर कहीं कोने में कहीं इन्होंने एक छोटा सा आर्टिकल छपवा दिया जिसको कोई देखे भी ना. ठीक है, तो ऑलमोस्ट ऑल द पार्टीज वर failed to comply with the directions being given by the honorable सुप्रीम कोर्ट. तो सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन तो कुल मिला के यहाँ पे कोई भी पूरी तरीके से फॉलो जो है वो नहीं कर पाया.
Now, coming to the next case, so the first case was basically related to the criminalization of politics, and in that we need to remember the Brajesh Singh versus Sunil Arora, and the previous case in which the directions were given, that was Ram Babu Singh Thakur versus Sunil Arora 2020. तो ये दोनों केसेस हमें पहले वाले में याद रखने हैं. Now coming to this particular case, that is State of Goa versus Fawzia Imtiaz Sheikh 2021. This is also very, very important. And why this is important? Because in this case it was clarified by the Honorable Supreme Court that if some person is already holding a constitutional, the government post in any state. ओके जब किसी स्टेट में वो ऑलरेडी कहीं पे कुछ काम कर रहे हैं, किसी एक अच्छी पोस्ट पे, मान लीजिए फॉर एग्जांपल इन दिस केस ही वाज अ सेक्रेटरी इन वन ऑफ द डिपार्टमेंट्स एंड ही वाज अ आईएएस ऑफिसर. ठीक है. एंड एट द सेम टाइम व्हेन ही वाज आल्सो द लॉ सेक्रेटरी और लॉ ऑफिसर, एट द सेम टाइम ही वाज गिवन द एडिशनल चार्ज उनको दे दिया गया वहां पे स्टेट इलेक्शन कमिश्नर का. ठीक है. स्टेट इलेक्शन कमिश्नर. तो यहाँ पे जो है ये क्वेश्चन तभी अराइज हुआ बिकॉज इलेक्शन कमिश्नर इज सच अ पोस्ट दैट इट इज ऑलवेज एक्सपेक्टेड दैट दैट पर्सन विल बी अ neutral person and he will behave like a neutral person and he may not be favoring anyone or so. So it is important that a person who is already holding a post under a government, under a state government, must not have additional charge of such a important post. इतनी इंपॉर्टेंट पोस्ट की जो है यहाँ पर आपको एडिशनल चार्ज नहीं दिया जा सकता है, और यही चीज जो है यहाँ पे इस पर्टिकुलर केस में चैलेंज की गई. उसके बाद इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको रूल आउट किया कि भाई इस तरीके से नहीं हो सकता है, बिकॉज दिस इज सच अ इंपॉर्टेंट एज अ सेंसिटिव पोस्ट दैट इट विल अंडरमाइन द आर्टिकल 243 के आर्टिकल 243 के जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दिया गया है, विच टॉक्स अबाउट द दिस स्टेट इलेक्शन कमिश्नर का अपॉइंटमेंट जो है वो किस तरीके से किया जाए और किस पर्पस के लिए किया जाए. तो दैट विल कंप्लीटली फेल इफ सच अ दिस सच अ इंपॉर्टेंट पोस्ट विल बी गिवन इन अ एडिशनल चार्ज टू सम ऑफिसर ऑलरेडी सर्विंग द स्टेट. सो इस तरीके का कुछ मैटर हुआ यहाँ पे, जहाँ पे कि जो ऑलरेडी एक आईएएस ऑफिसर थे उनको जो है एडिशनल चार्ज दे दिया गया. तो ये केस जो है यहाँ पे चैलेंज किया गया. So now we'll see that what exactly happened in this particular case. So the facts of this case are, in this case, law secretary of the government of Goa, he was a law secretary, a member of the Indian Administrative Services, was appointed as state election commissioner. State election commissioner की तरह इसको appoint किया गया था, जिस बात को यहाँ पे challenge किया गया है. The Supreme Court observed that giving an additional charge of such an important and independent constitutional office to an officer who is directly under the control of state government. See, here he was already working under the state government, okay? And now you are also giving him an independent constitutional office, okay? You are giving an additional charge. So Supreme Court कहता है, in our view, it is a mockery of the constitutional mandate. जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट 243 के अंदर इसको इंडिपेंडेंस और सारी चीजें दी गई हैं, इट इज अ मॉकरी ऑफ दैट. सो it is not right. So what next? The court says that Supreme Court bench held that such appointment of a government officer directly under the control of the state government is a subversion of the constitutional mandate contained in Article 243K of the Constitution. तो कहता है कि भाई जो प्रोविजन है, जो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन है, इसको कहीं ना कहीं ये अंडरमाइन करता है अगर हम इस तरीके की अपॉइंटमेंट्स को अलाउ करते हैं. Then court directed the state government to remedy this position by appointing an independent person to be an state election commissioner at the earliest. कहता है इसको हटाकर आप एक इंडिपेंडेंट इस पोजीशन पर किसी इंडिपेंडेंट पर्सन को जो है यहाँ पे अपॉइंट करें, नए पर्सन को. Such person cannot be a person who holds an office or post in central or any state government. जो ऑलरेडी स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट में अगर कोई पोस्ट होल्ड कर रहा है, that person cannot be appointed at this particular post because it is also a constitutional post. Next, if there are any such person holding the post of state election commissioner in any other state, such person must be asked
forthwith to step down from such office and state government concerned be bound to fulfill the constitutional mandate of 243। कहता है, साथ में ये भी कहता है अगर किसी और स्टेट में भी इस तरीके की चीज हुई है तो that state government also remove that person and appoint a independent पर्सन। सिर्फ एक इंडिपेंडेंट पर्सन को ही अपॉइंट किया जा सकता है फॉर सच अ हाई कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस। इतने बड़े एक कॉन्स्टिट्यूशनल पद के लिए जहां एक इम्पार्शियलिटी की जरूरत है, एक न्यूट्रलिटी की जरूरत है, वहां पर एक इंडिपेंडेंट आदमी का होना जरूरी है। दैट पर्सन कैन नॉट बी अपॉइंटेड हु इज ऑलरेडी सर्विंग अ स्टेट गवर्नमेंट और अ सेंट्रल गवर्नमेंट। सो दिस वाज अबाउट कि भाई एक ही पर्सन जो है एडिशनल चार्ज आप कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस के लिए नहीं दे सकते। इससे रिलेटेड था हमारा ये केस जिसका नाम था State of Goa versus Fawzia Imtiaz. That was Fawzia Imtiaz Sheikh. So this was the case, State of Goa versus Fawzia Imtiaz Sheikh 2021. Now we look at another case that is Bajranga versus State of Madhya Pradesh 2021. Bajranga versus State of Madhya Pradesh 2021. So this case is actually related to related to a land acquisition से रिलेटेड है, जहां पे कि गवर्नमेंट जो है वो एक्वायर कर लेती है बिकॉज इन द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश देयर इज अ सीलिंग। एक सीलिंग है कि इतनी लैंड से ज्यादा जो है आप अपने पास नहीं रख सकते। अगर इससे ज्यादा होगी तो गवर्नमेंट जो है एक्वायर कर लेगी। ठीक है, ऐसा वहां पे एक लॉ है जिसके तहत ऐसा किया जा सकता है, जो कि आपका एमपी सीलिंग ऑन एग्रीकल्चर होल्डिंग एक्ट 1960 है। 1960 का एक एक्ट है जिसके तहत आप एक लिमिट से ज्यादा जमीन जो है वो नहीं रख सकते हैं। इसके अंदर लिमिट जो है वो करीब 54 एकर्स की जो है इसके अंदर लिमिट है। इससे ज्यादा आप एग्रीकल्चर नहीं रख सकते हैं। तो ऐसा कुछ केस आया, बट द क्वेश्चन द कॉन्स्टिट्यूशनल पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो ये नहीं लैंड क्या हुआ है नहीं हुआ। द मेन कंसर्न ऑफ दिस पर्टिकुलर केस इज दैट कि भाई ये जो केस है इसके अंदर क्या जो हमारा जो राइट टू प्रॉपर्टी है, राइट टू प्रॉपर्टी, ये क्या ये एक फंडामेंटल राइट है या ये किसी और प्रकार का कोई राइट है क्या? इस चीज को यहाँ पे दोबारा से एक बार सुप्रीम कोर्ट क्लैरिफाई करता है इस पर्टिकुलर केस के अंदर कि भाई ये जो है ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, इट इज नॉट अ फंडामेंटल राइट, बट यस डेफिनेटली इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। और इसके अंदर जो है केस यहाँ पे लास्ट में ये भी चीज प्रूव होती है दैट द लैंड वाज अंडर द सीलिंग, सो दैट एक्विजिशन वाज नॉट राइट एंड सो इट वाज इन द फेवर ऑफ this person only. So let's look at this particular case. This is related to right to property and it is a constitutional right under Article 300A. So let's look at the facts. Agricultural dry land measuring 64.438 acres situated in MP belong to the appellant, which was in excess of the ceiling limit prescribed in the MP Ceiling on Agricultural Holding Act 1960. ठीक है, जो उस एक्ट के तहत है उससे ज्यादा यहाँ पे नापा गया कि उससे ज्यादा जमीन इनके पास है। वेयर बाय द प्रिस्क्राइब्ड लिमिट वाज सेट एट 54 एकड़। 54 एकड़ की लिमिट थी लेकिन इनके पास 64.438 एकड़ जमीन थी। Therefore, the competent authority had initiated the process to acquire the surplus land. और जो ज्यादा लैंड थी उसको भाई एक्वायर करने का प्रोसेस जो है स्टेट अथॉरिटी उसने चालू कर दिया। In furtherance of the aforesaid, the state government had initiated the process of taking over possession. तो उसने पोजीशन वहां लेना शुरू कर दिया। द एप्लेंट बीइंग अग्रीव्ड filed a suit for declaration of title and permanent injunction before the trial court। तो यहाँ पे फिर कोर्ट वो गए और उन्होंने कहा भी परमानेंट इंजेक्शन लगाई जाए, इस पे रोक लगाई जाए, जो ये पोजीशन इस चीज का ले रहे हैं इसको रोक लगाया जाए और टाइटल जो है वो मेरे नाम यहाँ पे किया जाए। Then when this case went to the honorable Supreme Court finally, so the bench held that when there was no surplus land, there could be no question of any proceeding for takeover of surplus land under this taking into consideration जो facts वगैरह थे उसको कोर्ट ने देखा और वहां पे कहा कि भाई जहां पे एक्सेस लैंड ही नहीं है, नो कोई सरप्लस लैंड यहाँ पे प्रूव होता नहीं है, तो इसके अंदर किसी प्रकार की प्रोसीडिंग का कोई मतलब ही नहीं रह जाता है कि भाई किस प्रकार की जाए। लेकिन इसके साथ ही एक इंपॉर्टेंट चीज को यहाँ पे रीआइटरेट करता है कोर्ट रीआइटरेटेड दैट राइट टू प्रॉपर्टी इज स्टिल अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट अंडर आर्टिकल 300A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अनुच्छेद 300A के अंदर जो संविधान का है उसके अंदर आज भी जो है वो राइट टू प्रॉपर्टी जो है एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, ना कि एक फंडामेंटल
right, not a fundamental right. It was a fundamental right, but it is no more a fundamental right now, and it is a constitutional right. कई बार ये question आपके papers में पूछा जाता है. That is why I mentioned this particular case, because बहुत ज्यादा questions आते हैं और बहुत ज्यादा confusion होता है लोगों को, whether it is a constitutional right or it is a fundamental right or it is this right or that right. So in this case also it has been reiterated that this is nothing but a constitutional right. यहाँ पे क्या है, ये constitutional right ही है 300A के अंदर. So this was it about this particular case. So I hope you all understood all the cases which we have discussed today. So thank you so much. Thank you so much for joining us. Bye bye. Take care. We'll see you with more sessions on different topics and all. So please keep watching and watching our channel, and keep subscribing our channel for more updates. Thank you so much.